Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you are doing well, staying healthy, and staying safe. And voting for Sushant Singh Rajput. एक दिन का छोटा सा ब्रेक लिया और लेना पड़ गया समझ लीजिए या लेना बनता भी था because we all in a way remembered Sushant on 14th. In a way, we celebrated his life. In a way, we also poked CBI and different agencies to come out and say a few things, give us an update, or at least give a closure for the family which has been waiting for this for a very long time. आज का ये session I'm gonna keep short and sweet, and we will again start in the next few days. I would say some back to basics. हम थोड़ी सी और बातें दोबारा से लोगों को पोक करने के लिए करेंगे so that they don't forget who the criminals are who are still walking free. तो वो सब शुरू करेंगे हम बहुत जल्दी. आज का ये session I'm gonna focus more on the protest that happened on 14th. It was a global protest, amazing energy all around. बहुत सारी positivity, बहुत सारी positive vibes, and of course that sadness that we all witnessed, that we all saw in Sushant's sister's face, expressions, body language, and that pain that nobody can take away from the sisters जिन्होंने अपना भाई आज से 2 साल पहले खोया. It was really really sad to see the way uh, they kept a strong solid face on that protest day, the whole day. और इसकी बहुत दिनों से बहुत हफ्तों से प्लानिंग चल रही थी. And it was not easy for them, I am sure, standing there on that particular day with all the warriors जो globally जगह जगह से जंतर मंतर भी आए थे, वो वॉरियर्स जो ग्लोबली प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो इंडिया हो, कहीं पर भी सब ने मिलकर बहुत बहुत ही ज़ोर से दहाड़े हैं सब लोग. स्पेशल मेंशन एंड अ कॉल आउट फॉर दिल्ली एंड कोलकाता बिकॉज दीज टू लोकेशंस, इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे पब्लिकेशंस, उनमें भी इनके बारे में अपडेट आया. एंड दैट्स वन ऑफ द आइडियाज़ बिहाइंड ऑल दीज प्रोटेस्ट कि वो जो न्यूज़ चैनल्स, वो जो आवाज़ जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू उठती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है. None of the news channels cover it. None of the news channel talk about Sushant anymore. तो ये देख के अच्छा लगा कि second death anniversary पे these news channels covered both Jantar Mantar as well as Kolkata warriors, and it was really heartwarming to see so many people come out. Uh, I am sure it was very heartwarming for all of you as well. But one of the highlights that I had or I personally experienced was Yash, who is also known as Dubai Tamizhan, उसका केदारनाथ जाना, केदारनाथ जाकर प्रेयर्स करना. वी ऑल एटलीस्ट जो लोग ट्विटर पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं या उसको मुझे किसी को फॉलो करते हैं, you would have seen the face, and that face will always be in my mind, in my heart for the rest of my life. Because this was a dream that Yash really wanted to fulfill. He wanted to do it for all of us, and he actually did it for all of us, especially for Sushant and his family. कि वो 14 जून को केदारनाथ वहाँ जाकर सुशांत के लिए प्रेयर करे, वॉरियर्स के लिए प्रे करे, सुशांत की फैमिली के लिए प्रे करे. And that was very very special for all of us.
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वीडियोस जो वो बहुत जल्दी अपलोड करेगा. हिज इंटायर जर्नी, हिज इंटायर चाहे वो शिरडी से लेके जो वो केदारनाथ तक पूरी जर्नी को कैप्चर किया उसने. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड end of the day, it really is very important that we keep on talking about Sushant, about this movement, because बहुत सारे ट्रोलर्स कहें, बहुत सारे PR कहें, they have become very active and they want to end this movement at any cost. But हम इसको movement को खत्म तो नहीं होने देंगे till the time we all don't get justice for Sushant. Uh, you must have seen, yes, Raviji, this is the problem, and this is a major problem in our country. Okay, justice is not only delayed, it's already always in many cases denied. And that's the sad part कि हर किसी को जस्टिस के लिए वेट करना पड़ता है, which should have been a kind of a given. यहाँ पर फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, डिमांड करनी पड़ती है जस्टिस, एंड दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. We'll continue to talk more about that. We'll talk about other people as well. I'm really shocked. Shocked तो क्या कहूँ? Shocked तो नहीं हूँ. I should not be even using those words. I'm really sad to see all these media channels trying to promote Riya Chakravarti, because she really doesn't deserve all that. थोड़ी देर पहले मैंने एक और क्लिप देखा. दिस गाय वायरल बिहानी, जो कि सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के वीडियोस और एयरपोर्ट लोग एंड व्हाट नॉट नॉनसेंस करते हैं. He has again been kind of running behind, I would say. Yeah, it's the other way around. Maybe, Riya Chakravarti would have given her a contract कि मेरे को जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरी फोटोज खींचो, मेरी फोटोज अपलोड करो. So he's again uploaded a video of Shavik and Riya walking out of gym. And that's the sad part. ये हैं वो criminals uh, who have conspired in the death of Sushant. And these criminals are roaming free on the streets, enjoying their life, attending parties, attending marriages, attending birthday parties, and doing their regular gyms and whatnot. और इनको कवर करने के लिए हमारे खुद के मीडिया हाउसेस, they are constantly portraying them as victims. Very sad to see all that happening. Sandeep Singh, for example, producing all these big movies. पता नहीं कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ गया. Doing all these nonsensical promotions, attending parties, sitting with stars, having dinners and lunches and drinks and whatnot. ये हैं वो conspirators जो सुशांत के मर्डर में इन्वॉल्व हैं, and they are roaming free. And compare it with Sushant's sisters, who not only have lost their brother, but they are the ones जो जंतर मंतर या ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे they're fighting for their brother constantly. हर रोज एक नई टैगलाइन, हर रोज एक नया fight that they are fighting on social media as well. Not only against the cabal, but also against the PR, also against some of the so-called जो अपने आप को warriors कहते हैं, उनको भी fight कर रहे हैं. They are investing their own time, effort, money, blood and sweat in all this. And what are they getting in return? A lot of hatred, a lot of trolling, a lot of abuses on social media. और अब तो उन लोगों से जो लोग अपने आप को सुशांत के लिए इस मूवमेंट में कहते थे हम आए हैं, वो लोग जो सुशांत को अपना भाई मानते थे, जो अपने आप को कहते थे कि
हम तब तक हैं जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगी. And now they are the ones who are abusing Sushant's family, those sisters. Very sad to see even that. और बाकी जो बचे कुचे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही फेम, अपने ही पब्लिसिटी, उसके चक्कर में उनको इतना कन्फ्यूजन है कि उन्हें यही नहीं समझ आता कि वो किस तरफ हैं, किस डायरेक्शन जा रहे हैं. And they're constantly at loss, and they're constantly deviating others as well. But that's again a very sad part of this entire movement कि किस तरह से लोग इस टाइम पे even after 2 years they're trying to break. और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस पीआर को जो अब उन्हीं वॉरियर्स के स्क्रीनशॉट्स उठा रहे हैं जिनको कभी हमने भी regard, you know, is there a clipping of Preeti ji speaking? Yes, Judy, I think Preeti ji came for a little while. Republic ने capture किया है, and I'm in the process of collecting all those videos, and then we'll do a kind of I'll upload it on Twitter as well. So everybody was there, Mamta ji, and maybe you know what we'll do. We'll also invite them to share their experiences. And yes, उससे मुझे याद आया कि this Saturday morning, India time, we will talk with Amit Verma, जिन्हें शायद लोग वेकअप सीबीआई के नाम से ज़्यादा जानते हैं आज की डेट में, because he has portrayed CBI and he's got literally, अगर मैं कहूँ, again this is just a joke, but he has been physically assaulted because वो अपने आप को CBI की तरह portrayed किया, and he was being poked by people to wake up. I have to give a lot of credit, to three people I completely have seen heads down working for this Jantar Mantar protest. Of course, Prashant, who has been the spearhead leading this effort. Uh, I'm sure even the family would be feeling the same. Uh, he has been relentlessly working, planning for a very long time. हर तरफ से उसको अटैक किया जाता है, हर तरफ से उसको अब्यूज किया जाता है, बट वो बंदा ऐसा है जो तत्समत नहीं होता और वो हिलता नहीं है. एंड ही विल कंटिन्यू टू डू दिस टिल द वेरी एंड इज माय कॉन्फिडेंस. एंड ऑफ कोर्स कपिल और अमित, ये दोनों वहाँ पर इंडिया में, दिल्ली में रहकर इन्होंने जो किया, जिस तरह से, आई मीन, अमित की तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी आई हैं, ही वाज विद अ झाड़ू and he was cleaning, or the reason I smile is not because what he was doing. The reason I smile is some very creative person shared a meme. Unfortunately, I personally cannot share that meme on public platform because uh, जब वो मीम अगर मैंने डाल दी तो अगेन जो मेरे पे अभी 10 अटैक हो रहे हैं वो 50 अटैक हो जाएंगे. बट whosoever has done that, kudos to you, hats off to you if you're watching. Be more creative and create more against actual criminals as well, is what I can say. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिया चक्रवर्ती से लेके, शाविक से लेके, पिठानी से लेके, इनके ऊपर मीम्स बनाओ. I think that'll be more important and relevant. But occasionally, ऐसी memes भी, they bring a smile to us. And yeah, few of you have the fortune of watching that meme. And but Amit Verma, kudos to you. I'm looking forward to our conversation on Saturday morning, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग बाहर रह के पूरा 10 to 5 तो मैं कहूँगा वी वर नॉट एबल टू डू एन एंटायर लाइव जस्ट ऑन दिल्ली प्रोटेस्ट, बट जितना भी हम देख पाए, जितना भी हम लोगों को रोल करते हुए देख पाए, it was very very positive. But we would love to hear him share his own experience, share how everything was done. And exactly, absolutely, SSRFC, they are one man army, and they've really helped in this entire thing. So these three people have really helped a lot. I'm sure there are many more,
behind the scenes जिन्होंने बहुत काम किया होगा, because it was beautifully done. That photograph itself was very special, Sushant ki. And उसके अलावा uh, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी जो लोगों ने बताई. There was everything was taken care of for people, and even the security, and again, RDX sir, Colonel RDX, amazing man, amazing. I'm so proud of him, as well as I am really blessed. He was the first one, I think, initial ones to reach there. He was initially looking for the place, and he was not able to find it क्योंकि बहुत security थी. uh, and he went live with us immediately to show us what all was happening there. And उसके बाद भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि this was really, and he's tweeted as well, that it was really very, very humbling to see how the entire family, the SSR warrior family, got together to remember Sushant, to celebrate his life, as well as the prayers and everything that happened. It was really very special. So thank you so much, Colonel. I'm really looking forward to some of the amazing sessions coming up very soon. And yes, we are all SSR army. बहुत सुंदर था सर, कृष्ण भजन संसद. Yes, absolutely. And anybody who was there in the who is in the chat, if you want to come and share your experiences, we're happy to hear. But more importantly, we'll do that on Saturday morning, when Amit will share everything that he was part of, and whatever he can. We went to the protest line and then asked him live, "Who the hell is Amit Verma?" Uh, I know. This is very shameful. Some of the warriors who have been doing whatever they can in their capacity should be appreciated. हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को appreciate कर दिया जो है, those people who have shown their real faces now. कम से कम वो लोग जो कुछ कर रहे हैं ground पे, we should not be saying such things like who the hell is that person or what. So not worth talking about those things. uh, the only other thing that I really want to highlight is ये movement, ये सब हम मिलके ही करेंगे, हम मिलके ही चलेंगे इसमें. We will bring more people together, we will continue to bring more people together, and that should be everybody's goal. But at the same time, we really need to showcase or highlight people who are disrupting this movement as well. बहुत सारे लोगों को अब डर लग गया है, based on what Priyanka Di has tweeted. She's going to take legal actions. कुछ लोग उस डर के चक्कर में भी they are trying to get into the good books, and it will continue. End of the day, I don't think even Priyanka Di family really cares about who is doing what now. End of the day, if you are here for Sushant and if you're doing the right thing, I don't think family has anything to say or to bother anyone. हमें इकट्ठे रहना है, हमें एक साथ मिलकर रहना है. And all these trollers, they have nothing better in life. Most of them most probably don't even have a job. A few of them have actually lost their job because उनको जो काम मिला था वो काम उनसे छीन लिया गया, to kind of run the movement their own way. और वो आजकल बहुत ही घटिया लेवल पे उतर गए हैं, इतने घटिया लेवल पे that they are trying to bring Riya Chakravarti and show her in great light. Uh, that won't happen. Don't worry. जब तक हम लोग हैं, हमारे जैसे warriors हैं, ये कोई भी कुछ नहीं कर सकता. They can bring anybody. People are saying Riya Chakravarti is very beautiful. Riya Chakravarti is this. Riya Chakravarti is that. We will continue to showcase, who this criminal Riya Chakravarti was, is, and where she would end up. तो आप रिया चक्रवर्ती को लाओ, मानिक शिंदे को लाओ, जिसको लेके आना लेके आओ. We know everything very clearly, और हमारी तरफ से we will continue to expose these people, criminals, and also this cabal that has risen up
who is attacking Priyanka the Me Too the. I've tweeted few. I'm gonna share more tweets more openly. मैंने जैसे कहा था 14 जून तक I'm gonna be very quiet. I'm gonna be just observing. I'm just gonna be watching. Our fellow warriors are being attacked. Amit Verma से लेके श्वेता से लेके Dipali से लेके everybody is being attacked right now. Why? Because they are speaking for Sushant. They're standing with Sushant's sisters. I think more importantly ये problem है इनको कि हम लोग क्यों प्रियंका दी को इतना support कर रहे हैं. Unfortunately for them, they are so sadly mistaken. They're so sadly mistaken that with their hatred or their negative energies, they are still losing, and they will eventually lose for sure. Few of them will definitely be, facing a lot of other challenges as well. वो टाइम पे आने पे सब कुछ दिखेगा, सबको पता चलेगा. But a little subtle, suggestion or warning to people who think they can uh, continue doing anything that they want to do, who think they can continue to abuse family. Uh, yeah, and yeah, I'll check all the messages as well. But जैसे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पिछले 14 दिनों में people who should be talking about Sushant should be talking about what happened on 13th 14th night, should be talking about what can we do from a next step perspective. Instead of doing that, they have been attacking warriors. They have been talking about people who are doing their bit. uh, recent most जो मुझे पता लगा है, अभी तक मैंने देखा या सुना तो नहीं है, बट पीपल आर विशिंग डेथ्स. मेरी भी कोई क्रिया करना चाहता है, अंतिम क्रिया, तो whatever. uh, and they are creating fake documents and whatnot, और धमकियां दे रहे हैं कि police commissioners and agencies and FBIs and all. इनको ये नहीं पता कि ये सब जो फालतू का ड्रामा, जो हिस्टीरिया क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ये लोग, it's gonna backfire, and it's gonna backfire in a very bad way. uh, it's matter of time, you know. बिना ज्यादा कहते हैं ना एग्रेसिव हुए या एग्रेशन दिखाते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं. वो कहते हैं ना, समय का थप्पड़ जब पड़ता है तो उसकी आवाज नहीं आती. तो ये पड़ेगा, ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा. एंड एग्जैक्टली सोहेली जी, आप ये देखें. Another person I'm going to highlight a little bit, even though she normally generally doesn't join sessions on YouTube. Once in a while she joins the spaces, is Shilpa Samai. She and I have been tagged कि भाई, we are part of the same team, we are doing whatever, we are behind the scenes and all that. As much as I am in the same place, no doubt about it, but it's not that I talk to her every single day or I interact with her on social media या कुछ. Once in a while we meet. Last time I met her was when we got together, I think, for Sushant's birthday. And since then, we haven't even met even once. We don't talk, but she has been attacked so viciously, that it leaves me सरप्राइज कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं. इनको जो दिखता है कि कोई कुछ कर रहा है तो उसको अटैक करो. Yes, she, I think, volunteered. Let me just use the word volunteered to help, with few things. A lot of people volunteered. It's just that Shilpa did it in DMs and all with people who actually should not have been trusted. तो इसलिए those messages were taken in a very wrong way outside. But eventually, all she wanted to do was help this Delhi Jantar Mantar protest. And
it was all personal kind of, money, as well as time that everybody wants to give, especially us जो हम लोग आ नहीं सकते. The least we can do is to help our fellow warriors. उसको इतनी गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, and she was abused, and she's continuously being abused. uh, the second person, who has been mercilessly abused, uh, even though she doesn't even have a YouTube channel, she doesn't even have a blue tick handle on Twitter, she doesn't even care about some of these things, has always been, not that I support her because she is someone who visit or comes to this platform more frequently, but even Sonal has been abused mercilessly. Um, and she continues to fight as well. Her dad, sorry to say, who's no more with us, has been, his name has been been abused, using the chats and all that stuff, and there is nobody who stops those people. Then there is Chetali, then there is Shweta. There are so many people who have been abused daily, and they're continuously being abused. कुछ नए नए नाम मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, uh, जो लोगों को दिए जाते हैं, टैग किए जाते हैं, अब्यूजेस, गालियाँ, एंड दे आर बीइंग शेम्ड. एक एक पॉइंट आई सी सिमी जी, मैं आपको 1 मिनट में लेता हूँ, एंड एनीबडी एल्स आल्सो इफ दे वांट टू कम एंड स्पीक. कुछ लोग कल बोलना चाहते थे. आई थिंक I did not want anything of that sort to be said on a session yesterday. Uh, but अगर आज आप कुछ बोलना चाहते हैं, feel free. This is your session. Come and speak your heart out. But एक चीज और जो मैं कहना चाहता था वो ये कि इस मूवमेंट के अंदर हम लोग अपने सारे पर्सनल कमिटमेंट्स, अपना टाइम, अपना बहुत एनर्जी लगती है. इट्स नॉट इजी डूइंग ऑल दिस अलोंग विद योर फुल टाइम जॉब्स, योर फैमिली कमिटमेंट्स, योर पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, एंड उसके बावजूद जिस तरह से ट्विटर या सोशल मीडिया पे थ्रेट्स दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, समटाइम्स फेक स्टफ. अभी मैं अगर मैं किसी दिन शुरू करूं, कल या परसों की बात है, टेलीग्राम पे भी देर आर पीपल हु आर नाउ क्रिएटिंग सम इडियोटिक आईडीज, एंड देन दे आर जस्ट गालीज निकाल रहे हैं, दे रहे हैं ऑन द टेलीग्राम एज वेल, विच इज फाइन, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो गाली आप जो दे रहे हैं वो अपने आप को ही दे रहे हैं, बिकॉज देर इज नोबडी एल्स इन दैट स्पेस, in that room, in that telegram group. So आप गाली दो अपने आप को ही, which is absolutely fine. All I can say is yep, thank you so much, Pratima ji. And specifically ये जो गैंग है, exactly, I think I never thought कि मैं एकता के लिए भी ये सब कुछ ऐसी बातें करूंगा कभी. Things I've been writing on Twitter for Ekta, it really hurts. It really hurts. But बहुत लोग उस टाइम पे भी मुझे बताते थे, समझाते थे, कुछ मेरे बहुत ही क्लोज लोग. I never listened to them. She has created a lot of issues earlier on से, शुरुआत से वो कर रही है. एक और ऐसा ग्रुप था जहां पर लोगों के अगेंस्ट इवन आई थिंक लीगल केस भी हुआ, and she was responsible for breaking that down. The entire team, she was responsible for breaking them as well. I was the only one who thought कि नहीं, मुझे नहीं लगता, my gut feeling says she is right. There were people recently भी, मैं कहूँगा साल 6 महीने पहले, who kept on telling me, Varun, Ekta is not the right person. I bloody did not listen to them as well. वो कहते हैं ना, कई बार किसी के ऊपर तुम इतना ज्यादा फ्रिकिन भरोसा कर लेते हो, और मैं तो आई एम द वर्स्ट एग्जांपल. आई वुड से आई हैव ट्रस्टेड एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी
under the roof, and they have all bloody backstabbed me. But what Ekta has done, forget me, forget all these people, all the warriors. What she's doing to Sushant, trust me on one thing, trust me on one thing. Ekta Kapoor nahi hai. Ekta uh, is someone who is, she's not even a warrior. Someone who was running some kind of campaigns. I was also part of some of those things. Someone who used to send tweets to retweet and share and all that stuff. But आज की डेट में what she has done to Sushant and Sushant's family, I am sure, I am very confident. I am a very religious person. I believe in God. I believe in all these spiritual energies and power. She has completely lost it, and she will, for the rest of her life, till the time she's alive, she will, again, बदुआ देते हुए भी बुरा लगता है, but she will repent, she will regret, she will back down in front of the family. सुशांत की फोटो के सामने जाके भीख भी मांगेगी माफी की. She will not get it. She is completely done. She is completely done. She has abused the sisters, both social media as well as I still remember. And हालांकि ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट आज इतना ज़्यादा इसने हर्ट किया है, तो मैं बोलूँगा. Even she has been on a call with me, and she has said things around Priyanka Di to me, and I just listened to those things. She tried to poison my brain, my mind as well, around the family. के बारे में नेगेटिव बोला. ओके, आई डोंट नो. सुपर्णा जी, अगर आपके पास कोई वीडियो है, कुछ है, तो प्लीज उसके बाद बोलें. Otherwise, let's not just put something like that without any validation. Amar, the reason I'm putting these names, I rarely put these names. I very like generic बातों में बातें करता हूँ मैं. The reason I'm putting these names is maybe you should go on Twitter and check what is happening. And I am really, really shocked to see the kind of abuses this individual has kind of leveraged around the family. So इसलिए ये नाम, और ये नाम क्या, there are 2 or 3 different people who have just abused Sushant, I would say, openly. दिखाएंगे ये कि ये सुशांत के लिए हैं, but they've forgotten कि Priyanka Di Meetu Di, they are the real sisters of Sushant, and what they are doing, what they've been doing, is something which, ऐसे फालतू के लोग प्रोटेस्ट कर से कोई काम नहीं होगा. Suparna ji, please share the video and all, if you can, and then we'll take it from there. So I don't want to talk about anyone else right now, especially not Ujjwal Trivedi, because end of the day, there are things I was hoping, but that has not happened. So let me. Yes, yes, Simiji, don't worry. I will. This has been tough, especially around Ekta, especially around those. उनके तो मैं नाम भी नहीं लेता, बाकी जो वेस्ट लोग हैं जिनको ना बोलने की तमीज है ना अकल है. एकता का तो सिर्फ इसलिए नाम लिया जा रहा है और बात हो रही है बिकॉज आई थिंक one of the comments that I think Venki put in, we all, a lot of us, supported. I still remember there was someone, क्या कहूँ, common person between us who wanted me to be calm, not take any of her abuses to heart. मैं बस उसको देखता रहूं वो क्या कर रही है. While they were trying to fix her, they were trying to calm her down, and I took a lot of abuses. And right now, as we see, she's crossing all the limits.
और अब मेरी पेशेंस भी जवाब दे गई. सो जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था वो भी अब मैं कर रहा हूँ. आई एम रिस्पॉन्डिंग टू हर. शी गॉट, आई डोंट नो, रैटल्ड और स्केयर्ड, जिस वजह से उसने मुझे पहले ब्लॉक किया. तो मैंने उसको भी बोल दिया कि पहले अनब्लॉक तो कर, उसके बाद बात कर. And now she's unblocked. So, but the way she has been abusing everybody, you know, I am not gonna give up. और मुझे जो बोल रही है कि मैं डरता हूँ, I am here. I am the one who has a face. I am the one who's coming on this screen. I am the one who's talking. So डरता कौन है, कौन फेक आईडीज बना के लोगों को ट्रोल करता है और करवाता है, ये तुम्हारे सामने है. वरुण कपूर ना वो एडवोकेट से डरा, ना वो जेम्स बॉन्ड जो बन के आया था उसके चेले चपाटे उनसे डरा, ना वो जो दुबई का क्या कहते हैं, नहीं दुबई नहीं, कहीं का वो पुलिस का ऑफिसर था लंदन का या जो भी, उससे डरा. एंड आज भी वरुण है जो यहाँ बैठा है सिंस अगस्त ऑफ 2020. हिम्मत है, कम विद फैक्ट्स. हिम्मत है, डायरेक्ट बात करो. और ये फालतू की जो 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 ट्रोलिंग चल रही है अराउंड द फैमिली एंड द एसएसआर वॉरियर्स, स्टॉप डूइंग दैट. वरुण, व्हाई डिड यू ब्लॉक मी? आई डोंट नो आप कौन है लासा जी. एंड अगेन देयर हैव बीन सम इश्यूज ऑन द यूट्यूब चैनल. एक हमारे रेगुलर ही कहूंगा, हमारे छोटे भाई की तरह, आयुष, even his ID is not working, so he had to create a new ID. So don't say कि I have blocked anybody. अभी तो बहुत कम लोग blocked हैं. अब तो बहुत सारे लोग open हो चुके हैं. But please let me know who you are. All right, you know what? Let's change gears. Hello, Simiji. How are you? Hello. Namaste. मेरा आवाज ठीक आ रहा है या डिस्टर्बेंस है? हाँ जी, आ रहा है, क्लियर है. अच्छा, यही बोलना था. बहुत बहुत अच्छा हुआ. ये अलग अलग जगह में इन्होंने प्रोटेस्ट किया. आई रिमेंबर सीइंग है दिल्ली में, देखे ना. आपकी आवाज कट रही है फिर. अब आपकी आवाज कट रही है. Your voice is cutting. Acha, can you hear me now? Yes. Now we can hear you. I love a disturbance for some reason. Yes. आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके या तो वापस आएं. You can hear me, I'll talk. आप दोबारा ज्वाइन करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है. Sure. All right. मैंने लिंक वैसे, अच्छा मैंने, sorry, I did not pin it. So let me see if I can pin the. Give me 1 second. Vanakkam, Yash. Hello. Thank you once again, Yash, for doing that amazing thing for all of us on our behalf. That was, I think, the highlight, of course, after the Delhi protest for me. I know. Don't worry, Amar. I will be out of it very soon. Hello, Simiji. Let's see if we can hear you. हर हर महादेव, सबको नमस्ते मेरा. तो बहुत अच्छा लगा. अलग अलग मैंने वीडियोस देखे, कोई तो लाइव भी देखी, but couldn't stay awake like the last time. The 2:30 AM तक थी मैं. Very encouraging. और जो slogans थे, I'm going to call it slogans, they're so beautiful and very touchy. So a few times when I repeated on one of the क्या जो स्पेस पे है बोल रही थी, तो थोड़े से आंसू आ गए. तो and positive. So we have to be positive, I guess. Even though
आई नो नहीं वहां पर इस्कॉन का तो देख के इट वाज रियली वेरी हार्ट वार्मिंग एंड द एनर्जीज वर टोटली डिफरेंट. सो और ऐसे ही मैंने बाकी और जगहों पर देखा हाउ थिंग्स वर बीइंग डन. लोग अकेले थे तब भी उन्होंने रोर किया, लोग ग्रुप में थे तब भी they did what they could on this sad day. But absolutely I think ISKCON वालों ने तो अलग ही एनर्जी दे दी सारी मूवमेंट को. Okay, looks like we lost Simiji because I see another Simiji now. Haji Simiji, can you? Okay, looks like she's having some network issues. Yes, I can hear you, but yeah, definitely. So Simiji, आपकी उनको बात करती हूँ. आपकी आवाज नहीं Yeah. आ रही, क्लियर नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. I don't know what's happening. Okay. Okay, then I'll just listen to you. Okay, I don't know. Hello Suparna ji, how are you? हाउ आर यू फाइन सर हाँ मैं जी. दो चीज बोलने के लिए आई हूँ मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ हाँ जी. मैं एक बात मेरे को एक बात समझ में नहीं आता जो एसएसआरआर है इतने लोग बिक गए ये मेरे को इतना दुख देता है क्या बताऊं पहले से आप लोग थे है और जो लोग पहले से कलकत्ता में प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे परेख जी त्रिवेदी जी जो है मैं 13 तारीख को एक वीडियो देखा त्रिवेदी जी का आप सर्च करके देख लीजिए उन्होंने बोला जे सीबीआई को सुशांत का केस ठंडे बस्ते में चले गए कोई काम कुछ नहीं होगा और 13 तारीख को वो 13 तारीख को बोला और 14 तारीख को बोल रही है जे प्रोटेस्ट क्यों करूं सीबीआई एजेंसी है ना हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करूं तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ जो अक्टूबर कलकत्ता में अक्टूबर में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो स्मिता पारेख त्रिवेदी जी सब लोग आए थे तो तब प्रोटेस्ट उन्होंने क्यों करने के लिए कलकत्ता आए थे इवन उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम किया था 14 तारीख को तो उन्होंने डिसलाइक बटन कमेंट्स बटन सब कुछ बंद कर दिया था Oh really? Okay. यस এবং उन्होंने बोला जे कुछ नहीं होगा ठंडे बस्ते में सीबीआई के ठंडे बस्ते में चले गए सुशांत का केस और बोला 14 तारीख को बोला प्रूफ ही कुछ नहीं मिला तो कैसे हो Wow. और प्रोटेस्ट क्यों करूं प्रोटेस्ट क्यों करे एजेंसी है ना हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करें तो प्रोटेस्ट अगर नहीं करे तो 2020 में अक्टूबर में उन्होंने कलकत्ता आया था प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आया था Yep. तब तो सीबीआई चले आए थे तो उस टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आया मैं इस टाइम पे तो आई एम शॉक्ड. मैं मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं. अगर ऐसा बोला है और आप बता रही हैं तो आई एम श्योर उन्होंने बोला है. मैं खुद बोला भी अब है तो सर सुनना मैं चाहूंगा. इतना डिसअपॉइंट हुआ मैं क्या बताऊं जो दो एक आदमी था वो लोग थे एसएसआरियन सच्चे एसएसआरियन तो उन्होंने ये बोला तो आप समझ सकते हैं तो और बाकी जन ने क्या बोला आप अगर सर्च करके देखिए 13 मैं तारीख और करूंगा. 14 तारीख दोनों दोनों आई विल वीडियो में सुपर्णा उन्होंने जी. बोला पहली बात तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा मैं आपको क्लियर इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत बोल रही हैं. आप इस हम्म, कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं तो आई एम श्योर आपने सुना है और इस वजह से आप हर्ट हैं. और आप ही क्यों, मैं कहता हूँ अगर ये हम में से कोई भी सुनेगा हम हम्म। सब हर्ट होंगे. बिकॉज दिस इज रियली नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ सर्टन पीपल. कुछ लोग ऐसे हैं मैंने जिनके मुंह से. तो त्रिवेदी जी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जो उन्होंने क्यों बोला आपको मूवमेंट छोड़ना है आपको क्या करना है वो आपका काम है हम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता है Yep. 1 कोटी एसेसरियन से 1 लाख चला जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा Yeah. तो आप ये सब गलत बात नेगेटिव बातें क्यों बोल रही है तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक 13th को वीडियो किया था और एक 14th को और हाँ एक 14 को किया था तो उनको सबने रिक्वेस्ट किया था सुशांत के लिए सुशांत एसएसआर के लिए जे कुछ वीडियो करे बाको बोले जी मैं क्या करूं मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं है ये इसलिए कि कोई
कोई कुछ प्रूफ ही नहीं मिले सीबीआई को, ठंडे बस्ते में चले गए केस। उनको उनको नहीं करे, लेकिन जरूरत नहीं थी उनको ये बात बोलने के लिए। एग्जैक्टली, नहीं, आई कंप्लीटली कौन एग्री विद पीआर दैट। है, कौन कुछ है, ये तो सबको पता चल रहे हैं। या नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, वो एक आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप मत बोले। से मैं वही तो यही बोला कहता मैंने, हूँ, आप मत बोलिए। मत बोलो, आप तो एग्जैक्टली। कमेंट बॉक्स में डिसलाइक बटन भी उन्होंने हटा दिया था। वाओ, मैं इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा, आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आई वुड से, क्योंकि मैंने बड़ी बार ओपनली बोला है कि द रीजन आई स्टार्टेड ऑल दीज काइंड ऑफ सेशंस वाज बिकॉज ऑफ उज्जवल त्रिवेदी। क्योंकि उनके मैं सेशंस में जाता था, राइट ये फ्रॉम। सर उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट लेकर, हर चीज में बहुत अच्छा कंटेंट लेकर वो वीडियो बनाते थे, लाइव करते थे। लेकिन ये दो दिन के लिए मैं इतना हर्ट हुआ, इतना शॉक हुआ, जे मैंने और लोगों की तरह इन भी ऐसे स्वरूप देखा रहे। या वाओ, थैंक यू, थैंक यू। आपके कहने के बाद आई कैन सी इन व्हाट्सएप कुछ लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए हैं, कोई कह रहे हैं कि अगेन ही उसको अब्यूज भी कर रहे हैं वो, तो कि यू शुड लिसन टू हिज स्ट्रीम ऑन जून 14th। और कमेंट सेक्शन में 13 को, पीपल हाँ, ब्लास्टेड 13 और हिम। 14 दोनों दिन उन्होंने किया। एक दिन वीडियो को डाला और एक दिन लाइव किया। लाइव में उन्होंने डिसलाइक बटन कमेंट्स बटन ही उन्होंने बंद कर दिया। Wow, I will definitely see this, and I'm really, this आप is आप प्लीज sad. चेक कीजिए, बिल्कुल, चेक I कर will, लीजिए। ठीक है। I will, I will नमस्ते वरुण definitely. जी। हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए सुशांत को, और हम लोग जस्टिस लेके रहेंगे ऑलवेज विथ यू। आप दीदी, प्रियंका दीदी, सबके लिए मेरे को इतना तकलीफ होता है। दीदी तो ठीक है, अंकल के लिए जो उतना उम्र हो गई, कब जस्टिस मिलेगा, कब I, जस्टिस मिलेगा। और समीर मनखेड़े जी के लिए ये बात, और एक बात बोलना चाहती हूँ, सब बोल रही है जी एनसीबी ने आर्यन का ब्लड टेस्ट नहीं किया। मेरे को जितना मालूम है, अरेस्ट के एक दिन की 2 दिन पहले उन्होंने हॉस्पिटल ले गए थे ब्लड टेस्ट करने के लिए। लेकिन मेरे को ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है उनको ले गए थे। मेरे इतना बुरा लगा, इतना शॉक हूँ मैं जी। इतनी ये उज्जवल त्रिवेदी जी ने बोल रहे थे, तो आप अगर प्रोटेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है तो आप कलकत्ता क्यों आए थे 2020 में? तब तो सीबीआई चले आए थे, ईडी आए थे, तो आप क्यों आए थे? wow. आप इस टाइम में आप बोल रही है प्रोटेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, एजेंसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, सीबीआई के ठंडे बस्ते में चले गए। आपको बोलने की तो कोई जरूरत नहीं थी ना। आपको Yeah, नहीं करना है, आपको धमकी मिली कि कोई मानी मिला, कोई कुछ भी मिला आपको, आप मत कीजिए, मत बोलिए। yeah. Thank you for ठीक bringing है। this up. हाँ, हाँ। Thank you हर so हर much. महादेव, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। Thank you so much. नमस्ते। Yeah, हाँ, हाँ, thank you so much. हम्म। Hey, Chitali, welcome and Hello, good morning. Varun. Good morning. Just tell me, my voice is audible and clear? Yes. Okay. The first thing which I would like to say, सुपर्णा जी यहाँ पे थे, वो एक प्रोटेस्ट के बारे में बात बोल रहे थे। The protest happened in 2020, 17 October. The first protest which we did in Calcutta, and I was the organizer of the protest actually. मैंने इसीलिए join किया. She was telling about it. I was the organizer, and from that time only I'm doing protest in Calcutta since 2020. Yes, on Uh-huh. that time Ujjwal ji came, Smita ji came, Ganesh also came, and some of the other person came on that time. It was a huge protest we organized in Calcutta, and many people joined over there. And Varun, on that time it was peak COVID time actually, एंड यहाँ पे गैदरिंग के लिए भी उतना परमिशन नहीं था स्टिल। सुशांत के लिए लोगों का इतना इमोशंस था ऑन दैट टाइम, like 200 to 300 people came in the protest, they joined it. I mean, on that time, the first time we started the revolution in Calcutta by organizing this ground protest. एंड इससे पहले एक्चुअली कैलकाटा पे देयर वर मेनी वॉरियर्स, बट कभी सब लोग एक साथ नहीं आए थे।
up for the protest. On that time, everybody came together. Now, Ujjwal ji ka video I haven't seen. I don't know what he has told. To be very honest, without watching it, definitely I would not like to comment. But I would like to convey one point. When he came in Calcutta, people, like welcomed him. People did a warm welcomed with him in Calcutta. Lots Yep. of people came over here, spoken to him. आई मीन उनको भी पता है कैलकाटा में उनको कितना रेस्पेक्ट मिला था। उज्जवल जी को पता है, आई मीन ही नोस मी वेरी वेल एक्चुअली। यहाँ पे माय पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट विश टू बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, फेयर इनफ। आई मीन ये तो आपका ये मूवमेंट पे रहने के लिए ये तो आपका अंदर से चीजें आना चाहिए दैट आई विश टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। पीपल कांट फोर्स यू, but if you wish to be or if you don't wish to be, that's your personal choice. Nobody is forcing you, but at the same point of time, just don't say this thing to people कि केस में कुछ नहीं होगा, protest करके क्या फायदा होगा। This is just not sounds good, you know. Absolutely. Yeah. I mean, And he's and, a and mature person. Yeah, he's a mature, person. Uh, I mean, and one more thing, and if you're running a platform, then I think ऐसा चीजें बोल के लोगों को demotivate करना नहीं चाहिए. That is my thing. And अगर यही बात है तो फिर 14 जून में जो इतना कंट्री प्रोटेस्ट कर रहा था, what they were doing then? In Delhi, in Calcutta, London, Italy, Lucknow, Indore, सब जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था। Maybe I'm missing many of the names. So what these people were doing then? Everybody has their own emotion in this campaign, and everybody is going to fight till the last extent. तो जिनको रहना है नहीं रहना है, it's up to them. It's a personal choice. राइट, बट एटलीस्ट डोंट टेल पीपल दैट प्रोटेस्ट करके क्या होगा, सीबीआई कुछ नहीं करेगा। दिस इज नॉट डन, आई मीन ट्विटर में आप देखते हो रोज ट्रेंड करता है, तो ट्रेंड तो यूं ही नहीं करता है, राइट? पीपल डू ट्वीट डे एंड नाइट, मैन, दे आर गिविंग द एफर्ट। if you don't wish to support it, at least don't discourage people. That's my humble request to all of them, जिनका ये टेक है। रेस्ट, उज्जवल जी जब आए थे कैलकाटा में, उनको बहुत रेस्पेक्ट, बहुत प्यार मिला था फ्रॉम कैलकाटा वॉरियर्स। ही आल्सो नोज दिस थिंग्स वेरी वेल। अब सिंपल सी बात है, उनको पता है कैलकाटा में इमोशंस है लोगों का बहुत ज्यादा सुशांत के लिए। The first protest we did in Calcutta is a huge one. I organized that, and along with me, there was one more person as well. Although he is not in the part of the movement anymore, तो उनको जब पता है लोगों का इमोशन क्या है इस मूवमेंट के लिए, एंड वरुण ऑन दैट डे हम लोग कैलकाटा पे 11:30 से लेके शाम का 7 बजे तक प्रोटेस्ट किए थे। 17 अक्टूबर था, इट वाज अ टाइम ऑफ दुर्गा पूजा। कैलकाटा पे, आई मीन हु हैव केम, उनको पता है कितना गर्मी होता है ऑन दैट टाइम, बट लोगों का इमोशन था सुशांत के लिए। People came in road, Republic came, they stayed over here for the entire day to cover the ground protest. It was a very huge thing. Ujjwalji was a part of it, but anyways, I mean, I don't, देखिए, मैं किसी का YouTube चैनल देखती नहीं हूँ, to be very honest with you, क्योंकि मेरा अपना काम रहता है। I do my own job and मुझे प्रोटेस्ट का भी काम करना पड़ता है। So if it's not that much important video, I really don't look at any of the YouTube channel. मैं बस आपका ही थोड़ा बहुत देख लेती हूँ to check some of the updates and all. I mean, whatever he has said, I don't have any clue. Definitely, I'll go through with that. But if he is not wish to be a part of this movement, I mean, he should not discourage warrior. A huge number of warriors is connected over here. सबने देखा है 14 जून में 2 साल हुआ था, 2 साल में कोई रिजल्ट नहीं है, तो भी सब लोगों ने प्रोटेस्ट किए। तो टू why to discourage the spirit of the warrior? And at the same point of time, when you are running a platform like a YouTube, right, so you need to be very much sensible and very much careful if you are conveying the thing. देखिए, अगर उज्जवल जी अगर मूवमेंट का पार्ट नहीं होते, इज अ डिफरेंट थिंग, कुछ सवाल पैदा ही नहीं होता। बट यू योरसेल्फ यूज्ड टू बी अ वॉरियर, यू हैव विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस in Calcutta, in other places you have visited. He has gone in Assam as well for the Guwahati protest. So आप जब different place को visit कर चुके हो, you have seen the emotion of the warrior. I mean, it shouldn't done. That is my thing.
And Varun, one thing, आप YouTube like you know you do the YouTube things and all, आप YouTube में बैठ के देखते हो लोगों का इमोशन, जज्बात, you know, uh, how people are connected in this movement. But जो लोग ग्राउंड में आए हैं, कुछ कुछ लोग ये हेलो, एक्चुअली आप वो प्रोटेस्ट के बारे में बात बोल रहे थे, राइट? मैं एक्चुअली आपके लिए ज्वाइन किया ये वाला, वो 2020 का प्रोटेस्ट, आई वाज द ऑर्गेनाइजर, ओके? एंड उज्जवल जी आए थे ऑन दैट टाइम। आपका शायद माइक नहीं है, आई मीन आई कैन हियर यू। हाँ, मैं भी था हुआ, अनिंदिता जी ओके, थे, गणेश थे, प्रियंका, स्मिता पारेख जी थे, उज्जवल जी थे, सब थे। मेरे राइट, आंखों का सर्जरी हुआ था उस टाइम पे। मैं 7 दिन के बाद यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था सेंट्रल पार्क में, मेरे पास तस्वीर भी है, तो मैं गया था उधर। राइट, तो मैं हर टाइम नहीं जा सकती, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, और इसलिए कि मेरे मम्मी, मेरे तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जा नहीं सकती। मैं कुछ कुछ राइट, टाइम में जाती हूँ, आपके साथ मेरे को टाइम मैच नहीं होता, प्लेस मैच नहीं होता, इसलिए मैं जय जी के साथ उधर मिलती हूँ। लेकिन मैं एयरपोर्ट पे रहती हूँ, उधर से मेरे सॉल्टलेक पास में है, इसमें मैं जा सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो बोल रही है उज्जैन जी ने, से प्रोटेस्ट करने में क्या फायदा, एजेंसी है, तो मेरे को डर लगता है। जो आप मैंने जो बोला, वो लोग तो देखते हैं, कब नहीं वीडियो डिलीट कर देंगे। लेकिन मैं ट्रू ये दैट, बात, हाँ एग्री। हाँ एंड वरुण, उज्जवल जी तो हम लोग के साथ रैली में चले थे प्रोटेस्ट में, व्हेन ही केम हाँ, इन द सब प्रोटेस्ट, चले थे, फर्स्ट रो लेकिन में। हाँ, आप 2 दिन 13 और 14 को उन्होंने ये बात बोला, मैं तो शॉक हो गई जी, क्या बोल रही है आप। करे ओके, ना बोले, करे कुछ नहीं है, लेकिन ये आई नेगेटिव बातें अंडरस्टैंड। क्यों फैल रही है। देखिए, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना वो जेन्युइनली मैं किसी का चैनल नहीं देखती हूँ। मैं बस वरुण का थोड़ा सा देख लेती हूँ, यहाँ पे मेरे को अपडेट्स मिल जाता है थोड़ा सा, सो आई क्विकली कम, मैं फर्स्ट फॉरवर्ड कर गई, गो थ्रू विद इट, रेस्ट मैं आई डोंट वॉच इवन एनीवन्स यूट्यूब चैनल। आई हैवंट वॉच वॉट एवर ही हैव टोल्ड। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, उज्जवल जी तो कैलकाटा में आके हम लोग के साथ आधा घंटा 40 मिनट रैली में वो चले थे वो ट्वेंटी प्रोटेस्ट के ट्वेंटी था, टाइम। और आप 22 है। सो व्हाट, बातें वेयर इज द बहुत चीज इमोशन? बदल गए। आई डोंट नो, राइट, मैंने आई यहाँ डोंट पर नो। इतना कहूंगा कि ईश्वरन भंडारी थे, जिनको मैंने हाँ हाँ हाँ, मैं 14 वही को बोलना चाहती हूँ, हाँ मैंने हाँ उनको हाँ। ट्वीट किया था, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया था कि बाकी सब के बारे में तो बात हो गई बॉस, कम से कम आज का दिन जिसकी वजह से तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से तुम खड़े हुए हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, कम से कम आज का दिन तो उस इंसान को याद कर लो कम से कम। बट ये वाला जो आप बता रहे हैं, राइट, मैं अब मेरे साथ चैट में भी कोई अपने स्क्रीनशॉट्स भेज रहा है कि हाउ दैट इंडिविजुअल आल्सो वेंट देयर एंड ही वांटेड टू जॉइन, और उन्होंने बेसिकली शायद जॉइन का भी ऑप्शन नहीं रखा था, तो उन्होंने चैट में बेसिकली बहुत लंबा कमेंट छोड़ा उसके लिए, उज्जवल त्रिवेदी के लिए। आई एम शॉक्ड नाउ, आई विल हैव टू जैसे ही मैं इस सेशन को एंड मैं करूंगा, आई विल हैव टू वॉच। मैं भी यही किया, कमेंट बॉक्स में मैंने भी मैसेज छोड़ा, जो आपने जो बोल रही है उस वीडियो में मैं तो नहीं डाल सका, लेकिन बाद में और कोई भी और नो टॉपिक्स में वो वीडियो छोड़ा था, तो मैं उस कमेंट्स बॉक्स में मैंने बोला जो नेगेटिव बातें मत कीजिए, आपको बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप अगर नहीं होगे तो हम लोग हैं, लेकिन मत राइट, नेगेटिव बातें मत कीजिए। ट्रू। एंड वरुण, आपको मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी, यू नो दैट राइट, पीपल हु, आई मीन स्पेशली हु रन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये फैक्ट तो सबको मानना पड़ेगा। सुशांत का मूवमेंट पे जब सब लोग ज्वाइन किए हैं, स्पेशली द यूट्यूबर, a huge number of SSRians have followed them. That is fact. Everybody have यप, to accept यप, that, you know. बिल्कुल। A huge number of SSRians have followed them. और यस यस, जो इतना ईशकरण, फिल्म, हाँ, यू एक गो अहेड, मिनट, आप बोलिए फिर मैं वो, बोलती हूँ, आप हाँ, सुपर्णा जी वो बोलिए पहले। ईशकरण भंडारी हो, उज्जवल त्रिवेदी जो, इन लोगों को कौन पहचानता था। सुशांत के लिए ही तो ये लोग नाम कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ईशकरण भंडारी एक बात भी कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी एक ट्वीट भी नहीं करते ईशकरण भंडारी। और सुशांत के बारे में मैं तो बहुत हर्ट हुआ, जो उज्जवल जी ने ये बात बोला, मेरे को तो मैंने शॉक लगा जी, क्या बोल रही है। यप, यप, दैट इज यप, ट्रू। प्लीज हाँ, सुपर। वरुण, मैं आपको वही बोलना चाहूंगी कि जब ये सब सब ज्वाइन किए थे विद द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड all of a sudden, I mean, a huge number of SSRIan warriors followed them.
subscribe their channel just to listen to them, what they're saying. In fact, abhi bhi a huge number of people listen to him. Ujjwal ji ko sunte hain bahut log, kyunki na people come and tell me, did you heard about his video, he was telling this and that. मैंने बोला देखिए मैं किसी का भी YouTube नहीं देखती हूँ. आई डोंट हैव एनी क्लू व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि अगर मैं दिन भर वीडियो ही देखूंगी तो हम अपना प्रोटेस्ट कब करेंगे. एंड मैं ग्राउंड का काम, आई ट्रस्ट ऑन द ग्राउंड वर्क बेसिकली. तो मैं किसी का नहीं देखती हूँ, बट हाँ आई केम टू नो पीपल गो एंड वॉच हिज चैनल. तो आपको पब्लिक सेंटिमेंट समझना पड़ेगा. इफ यू आर रनिंग अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड द पब्लिक सेंटिमेंट, राइट. एंड तो बात यहाँ पे ये है वरुण, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लोग दे आर वेरी प्रैक्टिकल. आई मीन मैं तो देखी नहीं वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई वॉच इट तो आई जस्ट, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल कंटिन्यू माई वर्क. बट देर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वॉरियर, दे आर वेरी इनोसेंट. उनको शायद लगता है कि शायद इनका बाद में कुछ वैल्यू है. तो इनोसेंट वॉरियर ना डिमोटिवेट हो जाते हैं. दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस. आपको क्या लगता है आज 2 साल बाद बहुत सारे वॉरियर्स थोड़ा सा कैंपेन छोड़ के चले गए हैं. हालांकि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर देयर, बट मेनी पीपल हैव लेफ्ट इट. व्हाट इज द रीजन? They have trusted the right people, but the right people didn't given them that kind of encouragement throughout this 2 year. That is the only reason people have left this campaign. So whenever, like, a huge number of SSR warriors follow you, people have sentiments for this campaign. You have to be a bit sensible before you convey anything in your public domain, right? Because it's all about the movement. Rest, if you want to support the movement, you don't want to support it, it's your personal choice. But if you can't encourage people, please don't discourage people. That is the main point, right? And वरुण, मुझे That's कुछ 2-3 पॉइंट्स बोलना था. थोड़ा सा मैं sure. जल्दी से बोल देती हूँ. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल, heartfelt thanks to you. ये जो हम लोगों का 13-14 पे ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, we have seen you. हम लोग तो I mean all the city and state, दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, इटली, हम लोग तो सब ग्राउंड में जाके प्रोटेस्ट किए. बट वी हैव सीन यू फ्रॉम 2 days you haven't slept. Without sleeping, पूरा रात जग के आपने पूरा सारा एक्टिविटी प्रोटेस्ट को कवर किया. एंड 14th को प्रोटेस्ट से जाने से पहले आई वाज वाचिंग योर लाइव. शायद इंडियन टाइम पे 11 o'clock से लेके रात का 9 तक आपने कंटिन्यूअसली इसको टेलीकास्ट किया. सो वरुण, विदाउट स्लीपिंग इतना घंटा बैठने के लिए भी डेडिकेशन लगता है. Without having food, without having anything, you're covering things. So it takes a lot of patience, lot of dedication. So heartfelt thank you to you for covering all the ground protest with so much dedication. And definitely, trust me, we look forward people like you. जैसे बोलता है ना, देखिए मीडिया यहाँ पे कवर करना बंद कर दिया है, ये दैट इज फैक्ट. सिर्फ दिल्ली और कुछ स्टेट्स में समटाइम मतलब मीडिया कम्स एंड कवर इट, बट बाकी जो लार्जर स्केल ऑफ कंट्रीज है वहां पे शायद मीडिया कवर नहीं करता. So we say that SSR warriors in media hai. They covered it. They spread it outside. So you are one of the person who is doing this thing. So huge love and respect to you. Whatever you did, through you, अगर हम लोगों ने कलकत्ता में प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट अगर बाहर का कंट्रीज ने देख पाया तो that is only because of you. First thing, huge respect to you. You just continue your work the same way you are doing. सेकेंड थिंग, आफ्टर 2 years, जब 2 साल मूवमेंट का हुआ है एंड सीबीआई ने 302 इम्पोज नहीं किया, अभी हम लोगों को ये सोचना चाहिए मूवमेंट को हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे. What the impactful things we can do, that CBI will come with a chart sheet, right? That is very unfortunate to see that justice campaign के साथ साथ parallelly trolling campaign चालू हो गया है. People are coming, people are trolling day and night some of the warriors very badly. That is unfortunate because जो troll कर रहा है वो भी एक टाइम पे इस कैंपेन का ही पार्ट था, जस्टिस कैंपेन का. And it's so much disappointing to see SSR warriors are converting into complete trolls, right?
So we need to be very cautious कि due to all this trolling and all, our campaign should not be getting affected. एक चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे, I have seen that. I know Amit ji very well. I know him from past 1 year. He also knows me very well. We were connected. I'm still connected with him. I have seen that. Amit ji went in Delhi. उन्होंने डेडिकेशन के साथ कुछ काम किया, उनका फोटो लेके दे आर ट्रोलिंग पीपल फॉर यू. हमको तो लगता है पास्ट 2 मंथ में ऐसा कोई दिन गया ही नहीं जब लोग आपको ट्रोल नहीं करते हैं. पहले मुझे पता नहीं था ये सब, आई डिडंट न्यू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, बट व्हेन आई केप इन टच विद यू आई हैव सीन दैट डे एंड नाइट ये तो चलता रहता है आपके साथ, राइट? देयर आर अदर वॉरियर्स एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू थिंक व्हाई दे आर पिकिंग अप दिस पीपल टू ट्रोल. देयर इज रीजन, देखिए दिल्ली प्रोटेस्ट में जो ये सब हो रहा है उनका एजेंडा ये है कि ताकि इन फ्यूचर बाहर का लोग आके प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, ताकि दिल्ली प्रोटेस्ट ह्यूज ना हो, ताकि प्रोटेस्ट का इंपॉर्टेंस कम जाए. दैट इज द एजेंडा. क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वरुण. ऑथोरिटीज आर देयर इन दिल्ली, राइट? ऑथोरिटीज विल बी लिसनिंग द वॉइस. सो दिस आर ऑल प्री प्लान एजेंडा की ताकि दिल्ली में इन फ्यूचर बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट ना हो. एंड इफ यू हैव अ लुक, दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली दोस वॉरियर who have went in Delhi protest. Like Amit ji, he has given his contribution. They have targeted Prashant as well. I have checked some of the tweets. They are targeting other warrior as well, right? If they're targeting you, so we need to understand why they are targeting you. I mean, you cover all the ground protest. You convey it to a larger number of people globally, right? So they are targeting all the important parts of this movement. So like we need to be very careful that our warrior, they should not be affected due to trolling and targeting, because 2 साल होने वाला है. It's a high time. We have to take this movement to a different extent right now if really we are seeking justice. अगर सच में जस्टिस लाना है सुशांत के लिए, we have to look forward for betterment of this campaign. But simultaneously, whatever these people are doing, that is not accepted. So my point is that our warrior, the strongest warrior who are getting trolled, don't get affected at all. If you are getting trolled, just understand that you are a very valuable part of this campaign. That is why you are getting trolled. In fact, मैंने अमित जी को भी कल यही बोला when he was conveying these things. मैंने बोला, I mean, these people have trolled me as well and some others as well. If they are doing things with you, you have to understand you have done something real good job. That is why you are getting trolled, right? So this is a pre-planned agenda to troll some of the very important very important warriors of this campaign. So we need to be very very careful from all these people. They will, as I've told you earlier, right, they will not stop. They will continue the work. 2 साल हो गया, जैसे मान लीजिए 2.5 years हो जाएगा, ये लोग और भी एक्टिव हो जाएंगे. आई मीन जितना हमें लगता है, दे जस्ट वांटेड टू ब्रेक एंड डैमेज द मूवमेंट. दे आर कंप्लीट डैमेज मेकर. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, 2 साल हो गया है, इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम. हाई टाइम वी हैव टू टेक द मूवमेंट टू अनदर लेवल. So we have to keep our spirit high, and we have to continue all our work. And one thing I would like to say, I mean, what kind of strategy they play. जैसे कैलकाटा में हम लोग का 13 और 14 2 दिन का था प्लान. एक दिन डोनेशन, एक दिन प्रोटेस्ट. 13 का एक्टिविटी का एक दिन पहले 12 को they were targeting me with they were cropping my picture with Shilpa this picture, and they're putting all this allegation stuff and all. सुबह से लेके शाम. तो आई मीन क्या लगा था आपको कि करोगे तो मैं अपना एक्टिविटी नहीं करूंगी क्या? अरे आप एक्टिविटी के टाइम में भी ट्रोल करोगे ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, because whenever I do activity, I keep my focus into completely the activity. Rest I don't even care, I mean, what people are doing things in Twitter. ट्रोलर का काम है ट्रोल करना, एंड वॉरियर्स का काम है ग्राउंड में काम करना एंड मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करना. सो आई मीन, आई हैव सीन यू वरुण, you always encourage all the warrior. Keep encouraging and keep motivating all the warriors so that their morale should not break down. Rest, 2 साल हो गया, high time we need to do something impactful and productive towards this campaign, so that first thing CBI 302 impose करे and charge sheet, they should
do the chart sheet thing in SSR case, the first prior things, and the rest, everyone, all the warriors, especially not talking about the trollers, let's get united, let's keep our same spirit high, and let's continue focusing on the work of the movement. Rest और बाकी जो लोगों को बैठ के डिमोटिवेट कर रहा है उनके लिए आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज पीपल आर मैच्योर्ड ओवर हियर. मैच्योर्ड होके भी आप अगर लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी डन. इफ यू कांट मोटिवेट पीपल, देन काइंडली डोंट डिमोटिवेट पीपल. क्योंकि इस कैंपेन में सबका अपना अपना इमोशन है, इमोशन से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं. सो इफ यू आर डिमोटिवेटिंग पीपल, समवेयर समहाउ यू आर हर्टिंग द पब्लिक सेंटिमेंट. So kindly don't hurt the public sentiment. Rest, Varun. You keep on continuing all your Nice. session. Whenever I'll get time, I'll join you. And more power to all the warriors. Thank you so much. Great, great. Thank you so much, Chetali. यस सुपर्णा जी, मैं आपको भी एक मौका देता हूं, बट इससे पहले मैं इस इंडिविजुअल को एक जवाब जरा दे दूं. बट वंस अगेन थैंक यू चैताली फॉर स्पीकिंग योर हार्ट आउट. You have seen it from ground level and you will continue to do it. We have full trust, we have full faith in you, and you're not one of those who will ever make a U-turn. I am myself very shocked right now listening about Ujwal ji, but I will definitely, if this is the case, and if I personally, once I witness it, I swear to God, I'm not gonna leave any of these U-turners. और हम लोग तो डेफिनेटली ऐसे ही कंटिन्यू, हमारे नंबर चाहे कम होते जाए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो एनर्जी, वो पावर कम नहीं होगी. और जहां तक रहा रावल बस जी, प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं. मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप थोड़ा गूगल सर्च करें, हाउ मेनी मर्डर केसेस हैपन इन आवर कंट्री. किस तरह से वो मर्डर केसेस अंडर द कारपेट कर दिए जाते हैं. Nobody is raising voice, nobody is standing with those families to support their kids, or those members जिनको brutally मारा जाता है. ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो ग्लोबल प्रोटेस्ट कई बार हो जाते हैं, कई बार नेशनल, कई बार लोकल प्रोटेस्ट होते हैं. वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं होते कि किसी को फेम देना है या किसी के बारे में बातें करनी है. वो इसलिए दिखाना होता है कि देयर आर ह्यूमन सेंटिमेंट्स अटैच्ड. देयर आर पीपल हु आर रियली हु फील अबाउट एक किसी मर्डर के बारे में या किसी ऐसी जो कहते हैं इनजस्टिस के बारे में. दे आर रेजिंग देयर वॉइस. एजेंसीज को और सबको ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट, लोग इस केस को, इस पर्टिकुलर मर्डर को या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट कवर इट अप एंड थ्रो इट आउट ऑफ द पार्क, बट एंड ऑफ द डे वी हैव टू रेज अ वॉइस सो दैट वी शो द एजेंसीज कि हम लोग इस केस को, इस इशू को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, एंड वी वांट जस्टिस फॉर दैट इंडिविजुअल, फॉर दैट पर्सन, फॉर द फैमिली. तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को कवर करें. सेकेंडली, जो फैमिली है, जो who have already lost someone, अगर मैं सुशांत की ही सिर्फ बात करूं, ये फैमिली जिन्होंने सुशांत को खो दिया है, उनका सुशांत तो वापस नहीं आने वाला, बट उनको एक वो जस्टिस से एक क्लोजर मिलेगा. दे विल बी एबल टू एटलीस्ट रेस्ट इन पीस देमसेल्फ. स्पेशली अगर आप देखें जिया खान के केस में, द सिस्टर्स, द मदर, कॉन्स्टेंटली 8 से 9 से 10 साल होने वाले हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट जस्टिस फॉर देयर डॉटर हु वॉज मर्सीलेसली किल्ड. सेम थिंग सुशांत के केस में, द फैमिली वुड लव टू गेट दैट क्लोजर ASAP, क्योंकि किसी को मारना कोई मजाक नहीं है. सो प्लीज, अगेन मैं वही रिपीट करूंगा, I will still give you as much respect as you deserve. अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोले, बस इतना रिक्वेस्ट है. अगर आपको नहीं लगता, आप मत आए. अगर आपको नहीं लगता कि ग्राउंड प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप अपने तक उस फीलिंग को रखें. यू डोंट कम आउट एंड यू डोंट सपोर्ट, यू डोंट प्ले एनी पार्ट. अगर आपको सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है, उसका पार्ट बनना है, वो बने, नहीं तो वो भी मत बने. बट प्लीज, it's not right to discourage people who are putting a lot of efforts to continue this fight. ये boycott Bollywood, ये कोई मेरे अकेले की फाइट नहीं है, और मेरे अकेले के बंद करने से भी
बॉयकॉट बॉलीवुड करने से बॉयकॉट नहीं हो जाएगा, बॉलीवुड बंद नहीं हो जाएगा. इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट. इंडिया और इंडिया से बाहर जितने लोग हैं सब मिलके जब करेंगे, हम उसका इफेक्ट देख पा रहे हैं. ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं बॉलीवुड के अगेंस्ट, बॉलीवुड हैज टैंक्ड लाइक एनीथिंग. So please, with all due respect, I would say, if you cannot speak good, don't speak negative, mat bole. And if you cannot support the family, please, it's absolutely fine. I cannot force you to support, or support the family or anybody. आप आगे बढ़ें, कुछ और करें. बहुत सारे और कॉजेज हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीवी पे ऑप्शंस हैं. आप प्लीज जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ. Leave us with what we are doing, because we will not stop, and we will, मैं इस मैसेज को जरूर पढ़ूंगा, उसके बाद प्लीज सुपर्णा जी आप जरूर बोलें. बट आई डोंट नो हु यू आर नीता जी. सर, मेरा बेटा भी ऐसे ही चला गया सुशांत का जस्टिस देखकर. मेरी हिम्मत खत्म हो गई, और मैं केपेबल भी नहीं हूं. मैं 65 ईयर्स की हूं. लड़ाई करूं या अपने पोते की परवरिश. मोर पावर टू यू नीता जी. ये कमेंट लिखना ही, आई थिंक, इज अ स्लैप ऑन एवरीबडीज फेस हु फील कि प्रोटेस्ट करने में कोई फायदा नहीं, किसी की जस्टिस की फाइट के लिए खड़े होने में फायदा नहीं. शेम ऑन दोज पीपल. ये होती है पेरेंट की हालत. एक मदर इज सिटिंग हियर. वरुण, मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगी अबाउट द पर्सन हु वाज टेलिंग दैट प्रोटेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है. आई वुड लाइक टू गिव से समथिंग टू द पर्सन. आई मीन, कैन आई गो अहेड फॉर 2 मिनट्स? प्लीज प्लीज. ओके. जो बोल रहे थे आपका कमेंट सेक्शन पे आके प्रोटेस्ट करके कुछ फायदा नहीं. आई डोंट नो आपने कभी प्रोटेस्ट किया है नहीं. आई डोंट हैव एनी क्लू. बट एक चीज आई वुड लाइक टू कन्वे. जिस स्टेट में प्रोटेस्ट होता है ना, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर को पता होती है प्रोटेस्ट हो रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग प्रोटेस्ट इन कैलकाटा, the administrative system in the entire Calcutta is aware about the fact that we are doing protest over here. In fact, the concerned CM of that state, they also know that we are doing a protest for Sushant. सेम गोज फॉर दिल्ली. अगर दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए, इस नेचुरल, मोदी जी तो अभी, अब मोदी जी विल नॉट कम आउट फ्रॉम हिज प्लेस एंड विल कन्वे पीपल, आई एम वाचिंग यू पीपल आर डूइंग प्रोटेस्ट. इट नथिंग लाइक दैट. बट या, जिस स्टेट में होता है प्रोटेस्ट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पता होती है प्रोटेस्ट हो रहा है. क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लिखने whenever you give the application to the police department that you're doing a protest, तभी वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है to the upper level of the government to let them know the protest is happening. That means गवर्नमेंट को पता होती है प्रोटेस्ट हो रहा है. अब देखिए, कोई स्टेट का सीएम आके तो आपके पास खड़ा नहीं होगा, बट उनको खबर होती है, उनके पास मैसेज कन्वे होता है प्रोटेस्ट इज हैपनिंग. इट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेस्ट. एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस. एंड वन थिंग, 2 साल से अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुड हैव क्लोज डाउन द केस. व्हाई दे आर नॉट क्लोजिंग इट डाउन? बिकॉज दे नो दैट a huge number of people doing protest each and every month for Sushant. So जब तक public will come in road, no one can close the case. Rather, they have to impose 302 in the case. It is the importance of the protest. आप हम लोग का कंट्री का हिस्ट्री सर्च करके देखो, जहां जहां जस्टिस मिला है, सब प्रोटेस्ट के लिए ही जस्टिस मिला है. निर्भया केस इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. दिल्ली में कितना धरना हुई है निर्भया केस के लिए. एक टाइम पे हर एक सैटरडे संडे को दिल्ली में कैंडल मार्च हुआ करता था इंडिया गेट के सामने निर्भया केस के लिए. ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड यूज्ड टू गो देयर. इतना प्रोटेस्ट करके निर्भया केस में जस्टिस मिला है. तो जस्टिस देने के लिए प्रोटेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट विल नॉट स्टॉप इन सुशांत सिंह राजपूत केस. जब तक जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, वी विल कंटिन्यू दैट. एंड आप जो क्वेश्चन समवन वाज रेजिंग, फायदा क्या है, मैं आपको इम्पोर्टेंस बोल रही हूँ.
दिस इज द इम्पोर्टेंट। गवर्निंग बॉडी को पता होता है प्रोटेस्ट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पता हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड दैट इज आवर प्रायर कंसर्न टू लेट देम नो दैट वी आर डूइंग द प्रोटेस्ट फॉर सुशांत, so that they need to know that we can't do any mess about it. We need, अगर देखिए सीबीआई साइलेंट है दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट दे हैवंट क्लोज द केस, राइट? अगर प्रोटेस्ट नहीं होता दे कुड हैव क्लोज द केस एज वेल। उनको पब्लिक सपोर्ट दिख रहा है ह्यूज नंबर पे, एंड इट्स ऑल अबाउट अ पब्लिक सपोर्ट। इफ वी आर इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट, इफ वी आर इलेक्टिंग अ सीएम इन अ स्टेट, so then definitely we can fight for justice as well. So it's all about how you can convey the public support for a particular cause. Twitter is important, definitely digital media, but आपको रोड में भी आके वॉइस रेज करना पड़ेगा for the cause. Then only masses will come to know that you are raising voice for it. That is the importance. तो जिनको लगता है कि कुछ होने नहीं वाला है, I don't think so, आपको शायद प्रॉपर नॉलेज है इस बैकग्राउंड का। हर एक प्रोटेस्ट का इंफॉर्मेशन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, for the particular state and governing body को, and they are aware of it कि सुशांत warrior is doing the protest। यहाँ पे सिस्टम को पता है अबाउट ऑल द प्रोटेस्ट, एंड प्रोटेस्ट के बाद हम लोग जो फोटो वीडियो डालते हैं ना ट्विटर पे पीएमओ एचएमओ को टैग करके, लाइक एवरीबॉडी फ्रॉम द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दे आर एक्टिव इन ट्विटर। उन लोगों का जो ट्विटर हैंडलर होते हैं ना, दे आर वेरी एक्टिव। इंडिया का टॉप 10 जो ट्रेंड्स होता है, सब मिनिस्टर चेक करते हैं व्हाट इज द टॉप 10 ट्रेंड्स इन इंडिया, व्हाट इज द ऑनगोइंग इश्यूज हैपनिंग। So all our protest picture video, they can see that whatever we are doing, so that is the reason behind of doing the protest. So there are a lot of importance behind the protest, and ground protest is one of the main reason which is making this movement alive. So please don't come and say that protest करके क्या फायदा होगा। मैं तो आपको 10 पॉइंट शायद बोल दिया, अब नेक्स्ट बार आऊंगी तो मैं और भी पॉइंट्स लेके आऊंगी। You need to understand what is the importance of a protest. Thank you, Varun. Sure, thanks. सुपर्णा जी आप बोले, उसके बाद फिर I'll talk, but please go ahead. क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। मेरे को इतने टाइम से जो मालूम पड़ा वो है कि सुशांत के मूवमेंट में जुड़े रहना इतना आसान नहीं है। गुड एनर्जी, गुड पॉजिटिविटी, गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सोल, अगर कोई सुशांत के मूवमेंट के साथ जुड़े रहे तो इस चार्ट से होना जरूरी है। यही बात बोलना चाहती हूँ। और जो टोल करते हैं उस लोगों को टोल करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मेरा काम करेगा, वो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल वरुण सही जी, कहा। जाते हैं, अच्छे रहना। नमस्ते Thank you so वरुण जी, much. Namaste. नमस्ते Take care. चैतन्य जी, नमस्ते। God bless. God bless. All right, Ayush, आपके बोलने से पहले मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, this has really shaken me. नीता जी, hats off, शत शत नमन है आपको। अपना बेटा खोने के बावजूद आप कह रही हैं कि सुशांत की मूवमेंट में आप शुरुआत से हैं, और वो कन्विक्शन आपको है कि सुशांत को जस्टिस भी मिलेगी। ये हैं वो प्रेयर्स of all those mothers, all those parents. Hats off to you and more power to you. And thank you for sharing this. It's not easy sharing such things with anybody. God give you more power and give you a very, very long life for your grandson. Bolo Ayush, please. नमस्ते। Namaste. सबसे हार्ट ब्रेकिंग कमेंट इन्होंने रख दिया है। मतलब आप इस एज में हैं कि आप में वो काबिलियत है कि लड़ सकें, आप दूसरों के लिए एक वो इंस्पिरेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि कितने भी कुछ हो जाए हमें डटे रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। और कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट के फायदे से क्या होता है। इन लोगों की थोड़ी हिस्ट्री में बता दूं, अगर प्रोटेस्ट ना होता तो देश आजाद होता क्या? नेवर। प्रोटेस्ट हुआ, उन दिनों तो ट्विटर भी नहीं होता था, ना व्हाट्सएप होता था, या कोई टैगलाइन भी नहीं होता था कि भाई मॉर्निंग का टैगलाइन ये, इवनिंग का टैगलाइन ये, कि ये डालने से सीधा अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाएंगे, या इन फोटो को 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अंग्रेज इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। सॉरी,
ये उन इंडियंस की एफर्ट थी जो आज़ादी मिला। ठीक वही से इंस्पायर होके एसएसआर वॉरियर्स ने वही काम किया कि अभी भी डट के खड़े हैं। वो पावर, वो सारे एफर्ट्स जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। और रहा सवाल अमित वर्मा जी के एक्ट पे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। अरे भाई, नहीं देखना है मत देखो, अनफॉलो कर दो उन्हें। इस तरह से कमेंट क्या कर रहे हो? और जो दिखाया वो सही दिखाया, हैट्स ऑफ बनता है उनके लिए। किसी भी वॉरियर्स के ऊपर उंगली उठाना बेकार है, पहले खुद तो कर लो। बिल्कुल। Yep. Thank you, Ayush. And Shweta ने join किया. Hello, Shweta. Hope you're doing well and reached home back safely. हाय वरुण, मेरी आवाज पूरी चली गई, सो सॉरी अबाउट दैट। Oh wow. Okay. या और उसके बाद आई हैव बीन वेलकम विद सो मच ऑफ ट्रोल्स अराउंड ऑन ट्विटर, सो माय वॉइस एंड द थिंग्स अराउंड अ गुड कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन। आप कम ही सो बोले फिर आज. आज तो मैं ये कहूँगा कि कम बोलो. But मैंने इनिशियल सेशन के में बोला था, that few of the warriors, including you, Sonal, Dipali, and there are प्रशांत की तो अब क्या बात करें. प्रशांत और हम तो अलग ही लीग में आ जाते हैं हम सब लोग. तो इतनी ट्रोलिंग इतना ज़्यादा गंदगी हमने देख ली है. अब हमें मोस्ट ऑफ अस आई थिंक वी शुड हैव डेवलप दैट थिक स्किन. बट कई बार कुछ चीज़ें कुछ लोगों की थिक स्किन से भी निकल जाता है एंड दे हर्ट वेरी बैडली. एंड आई एम श्योर या you have seen it way more than anybody and you have suffered way more than any of us. या But don't lose hope. That was the idea behind this conversation today. Don't यस lose hope. You're not going to leave them. Karma's not going to leave them. या But आई मीन माय ओनली मैसेज इज दैट I have been told that people who went to Delhi are not real SSR warriors. Okay, so how and what makes you define a genuine SSR warrior? If one is standing by the family, by Sushant, they are called ingenuine or, I mean, standing with the wrong people. My, I want to say, just open up your eyes and see around. My only message would be that who all were present there in Delhi that day, एक डिवाइन फीलिंग था, डिवाइन पॉजिटिविटी आप लोग लेके आए हैं. एंड सुशांत का सोल और एनर्जी सच में बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर है. आई yep. फेल्ट बैड दैट personal photographs have been circulated, and when I asked people, they have denied. इतनी टेक्निकली equipped मैं भी हूँ कि I know how Instagram works, okay, how WhatsApp works. So just don't try to fool me. I know आपने किया है, नाम नहीं लूंगी. Just don't do that. इतनी चीप हरकतें मत करो भाई. Don't come to such cheap tricks. एंड एक सिंपल ग्रुप फोटो को आपने क्या कर दिया है, उसमें सिर्फ वी वर एडजस्टिंग जस्टिस फॉर एसएसआर. वो ऊपर नीचे हो रहा था, हमको सिंक में चाहिए था, सो वी वर जस्ट टेलिंग देम कि ये ऊपर करो नीचे करो. ओके, तो उसमें आपने एक मेम बना दिया कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. भाई कौन सी, किस तरह की इंसान, इंसान भी नहीं हो, भगवान भी सोचता होगा कि मैंने इसको इंसान क्यों बनाया. थोड़ा तो आप कर लो. यानी उस भगवान जिसने आपको बनाया है उसकी इज्जत कर लो भाई. बिहेव लाइक वन ह्यूमन. सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है. अरे बस करो बस आज के लिए. आई थिंक preserve your energy या and get back to normal on Saturday. Let's talk more. यस मैं नहीं चाहूंगा कि और अपना इस टाइम पे गला खराब करो और हालत खराब हो. दिस इज रियली, I know you या rode like a lioness, you rode like a tigress as well. So please या be just calm down. Don't worry about these strollers. इनको तो हम handle कर ही रहे हैं slowly. But be strong and keep roaring. थैंक यू वरुण, Uh, थैंक यू आयुष. all right.
take care, and please gargle karo and take rest, please. Yes, yes, yes. Thank you so much. All right, thank you. All right, I know, Shweta ko to I could have asked her to speak for long, but मुझे लग नहीं रहा कि this would be the best thing to do right now. Let her take some rest. Ayush, before I end the session, कुछ और कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं कहूँगा श्वेता दी को कि गेट वेल सून, जितनी जल्दी हो सके आप ठीक हो जाएँ। और आपको भी ये कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप डगमगाना मत, क्योंकि ये लोग की आदत बहुत खराब है। हम कुछ भी अच्छा करने जाएँगे, लोग टाँग खींचते ज़रूर हैं। क्योंकि अगर आप हो, तो आपके कारण ये आप जैसों के कारण ये मोमेंट अलाइव हुआ है, वरना खत्म था। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू और हैट्स ऑफ टू ऑल वॉरियर्स जो राजकुमार अंगद की तरह अपना पैर जमाए रखे हुए। थैंक यू। Thank you, Ayush. Or absolutely, Tripti ji, our only target and focus is justice. Never mind the politics or personal issues aside. Justice is the index. Absolutely. Thank you, everyone. और जैसे मैंने कहा, I will make sure, at least जब तक मैं हूँ, मैं तो सुशांत की फैमिली के साथ रहूँगा। ये प्लेटफॉर्म भी सुशांत की फैमिली के साथ ही रहेगा। जितना मेरी कैपेसिटी में है, जितना मेरे हैसियत में है, I will continue to fight with the sisters. I will try to, as much as I can, defend, protect. वो उस घर की जो एक मर्यादा है, उस घर की एक रिस्पेक्ट है, that has to be maintained. They have lost their son, their brother. और अगर हमसे अब इतना भी नहीं हो सकता कि we maintain the respect and regard for that family, then shame on us. And we should not be tagging ourselves as warrior. So सुशांत के वॉरियर हो तो सुशांत के लिए, उसकी फैमिली के लिए वैसे ही खड़े हो जैसे सुशांत खुद खड़ा होता. So I will continue and we all will continue. Thank you so much. And trollers, bring it on. जो लेके आना है लेके आओ. We will handle you, but we are not gonna stop and will not let the family stop. They will get justice. Sushant will get justice. And Sushant's father will get a closure. ओथ ली थी सबने, अब निभा के दिखाएंगे. Justice for SSR. Jai Hind, Jai Bharat. Take care. God bless everyone. And let's keep rolling. Bye bye.